जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग ऑल वेलकम ऑल टू ओडिशा सिविल्स एकेडमी आज इंपोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स ऊपर आज हम डिस्कस करबा जस्ट अ सेकंड ओके सो गवर्नमेंट स्कीम्स जेमते हमें फर्स्ट पार्ट रे हमें डिस्कस करते इंपोर्टेंट स्कीम्स ऊपर आज भी सेमती विल कवर एरियाज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग हेल्थ सेक्टर हाउसिंग आउ जदि हमें देखबा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वर्तमान बहुत ही गुडे क्वेश्चंस हम पचार जदि हम देखबा कि इधर वे दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट सेक्टर जेमते प्रथम थिला फर्स्ट पार्ट रे हमें रिन्यूएबल एनर्जी कवर करथिले सेमती एई पार्ट रे हमें कवर करबा एनर्जी पर जदि इंपोर्टेंट देखबा हेल्थ बहुत बड़ बड़ सेक्टर then housing and the infrastructure these are the very necessary very important जो थे prelims हो mains हो सबुथरे एटा important okay what is second तो तो एई जिंस ऊपर जदि हम देखिबा कि क्वेश्चंस समाने पचारचंती प्रीलिम्स रे समाने जदि देखियो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पचारचंती और प्रीलिम्स तो हमर 7 दिन रहला एई समय रे इशू जिंस ओडा माइंड रे रिवाइज हेले देखले हमको डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ अस राइट ओके स्टार्ट करिवा रिजल्ट बाहर ये रिजल्ट ऊपर हम कहबी तुमको हमर ओडिशा सिविल्स एकेडमी रो भी जो भी छोटो एक छोटो ऑर्गेनाइजेशन जो भी जितने की भी मोर देन 70% रिजल्ट होइछि जो माने पढ़छन डेफिनेटली रैंक योर 50 30 देन योर 129 अगेन 195 जो ना इतिकी पुराना जो माने आगु प्रीवियस स्टूडेंट्स हम बहुत जण अछंती बट एठु ए जगह सिंपल ऑन द वी आर फोकसिंग ऑन द क्वालिटी एंड डेफिनेटली एंड रिजल्ट मु सब भी कहे जो भी काम करो डेफिनेटली क्वालिटी सहित कले निश्चित रूप रिजल्ट हो आगु बढ़िबा गवर्नमेंट स्कीम्स ऊपर कहया पूर्व हमें देखिबा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स ऊपर ता परे मु पुनी ओडिशा पार्टटा पुनी नेबी तुमको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग संगा मित्र हाउ आर यू अच्छा बर्तमान आम देखियो आज देखियो फर्स्ट आयुष्मान भारत ऊपर देखो यही सब स्कीम्स गुड़ा तुमको देखिक लगुव कि नहीं आम तो ऑलरेडी गवर्नमेंट एटा पुराना स्कीम्स गुड़ा हमको बर्तमान एकु गवर्नमेंट कौन कर फॉर योर इनफॉरमेशन गोटे डाउट तुम भितर रखिबनी एटा फॉर योर इनफॉरमेशन गवर्नमेंट ए स्कीम्स गुड़ा को रिवैम्प कर न्यू एडिशन जमती मनरेगा जमती आयुष्मान भारत जमती योर ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सो दिस आर द वेरी रेलेवेंट वी कैन से वेरी रेलेवेंट राइट ठीक अच्छे आयुष्मान भारत जो देखिए हेल्थ सेक्टर ऊपर दिस इज एन वन ऑफ द बिगेस्ट देखिए इंडिया रा हेल्थ सेक्टर स्कीम्स ऊपर बहुत बड़ देखिबा ऊपर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री राइट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जोटा कि कहउची ABPMJAY हैला ABPMJAY is a national public health insurance scheme for the government of India that aims जोटा कि aims करची very good संगा मित्र that aims to provide free access to health insurance coverage of low income earners जो माने बेसिकली लो इनकम earners अछन सेही मानक पई स्कीम्स था एटी कोन होबो कीवर्ड गुडा खाता पेन धरि कि सब बसिबो हम सेहिथि हाइलाइट कर देबी को जगह तमे ताकू पॉइंट आउट करिवो राइट को जगह हमें पॉइंट आउट करिवो दैट इज मोर इंपोर्टेंट ठीक अछि लो इनकम earners कोन होबो इट प्रोवाइड्स कैशलेस फ्री हेल्थ कवरेज अप टू 5 लाख परीक्षा क्वेश्चन कोडी आसीबो हैला कैशलेस कवरेज हेल्थ कवरेज अप टू 5 लाख पर ईयर जदि देखो 5 लाख पर एनम हैला पर एनम जदि देखुछो तमे 5 लाख पर ईयर कैशलेस माने तुमको कार्ड दबक पड़िबन तमे ए पैसा दबक पड़िबनी तमे कि जदि तुम पाकर सेठी जेमती वर्तमान आयुष्मान भारत हैला से कार्ड जदि तमे देखुछो सीनियर सिटीजन पे बहुत बढ़िया स्कीम्स गवर्नमेंट एथरा करिछि हैला ताले तमे सेही कार्डटा देखिले तमे संग संग टिके वेट करियो पड़ियो डेफिनेटली इट विल बी डन ओके ए टाइप रो वर्तमान गवर्नमेंट ए सुविधा दोछि then you are eligible to for treatment of critical illness हैला eligible for the critical illness and listed private hospitals across the country हैला private hospital across the country ऊपर across the country right it was launched in September 2018 by Prime Minister Narendra Modi केबे हेतिला सेप्टेम्बर मास 2018 रे इट लॉन्च हेतिला बट वर्तमान डेवलपमेंट कोन न्यू डेवलपमेंट दैट इज मोर इंपोर्टेंट टू जानिबा राइट तो हम कोन जानले कीवर्ड कि कैशलेस कवरेज अप टू 5 lakhs
and it is basically low income group है low income group को मानन पे ए schemes टा basically Ayushman health. So in a significant move the union cabinet approved major expansion of the Ayushman Bharat ହେଲା कौन है जदि हमें देखिबा कि हमरो हेल्थ सेक्टर यूनियन कैबिनेट से माने मेजर एक्सपेंशन के लिए आयुष्मान भारत ऊपर प्रधानमंत्री आरोग्य योजना ऑन द सेप्टेम्बर 11 2024 माने जस्ट लास्ट ईयर जदि हम देखिबा जदि तो सेप्टेम्बर मास माने लास्ट क्वार्टर जदि देखिबा कि वर्ष 1.5 वर्ष तळे तो एटा को कोन हला पुनी एक्सपेंशन कले व्हाट आर द एक्सपेंशन लेट अस नो रमनाथ सर प्रीवियस ईयर डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल मैथ्स अच्छा मैथ्स उपरे तो मु वर्तमान जिंस उपरे कि सेटा टिके मोर एक्सपेंशन करूची डेफिनेटली आई विल लेट यू नो डेफिनेटली ओके ठीक अछि थैंक यू फॉर आस्किंग आई एम रियली डिलाइटेड फ्रॉम सच योर क्वेश्चन डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली धीरे धीरे सिंस वी आर ग्रोइंग सो जिंसटा को मु देखिबी एक्सपेंशन एज पर द नीड डेफिनेटली आई विल कैटर दिस वन राइट ओके सो अंडर दिस decision all senior citizens basically कौन कल एक्सपेंशन ने all senior citizens age 70 है 70 वर्ष and above will receive health coverage आगुर थिला कोन कि सीनियर 70 है बेंचमार्क है 70 years right कोन कहली 70 years and above है 70 years and above ए माने ही अवेलेबल कर परिबे बेसिकली ए माने ही अवेलेबल कर परिबे regardless their income someone income measure depend करे it is basically for the senior citizen it helps immense many millions of senior citizens in our country so it is expansion set to benefit around 4.5 crore families पाखा पाखी जदि हमें देखिबा हला 4.5 crore families को ये हेल्प करछि right 4.5 crore families को हेल्प करछि including 6 crore senior citizen can you imagine 6 crore माने केते हलानी पाखा पाखी 60 million senior citizens are covered under this one एडी एटा मन रखे एडा सब केते हबो 60 million senior citizen तमर क्वेश्चन आसी पारे 60 million senior citizen और फैमिलीज हला पाखा पाखी जदि हम देखिबा हला 45 राइट 45 million और एति फैमिली तो कैन यू इमेजिन केते बड़ो वास्ट कवरेज होची आई जो वर्तमान जो रिवैम्प हला मन रख सब स्कीम गुडा रिवैम्प होची तमे पुराना भाबनी तो सब गवर्नमेंट स्कीम रिवैम्प जेमति तुम गोटे एग्जांपल दिले मनरेगा वर्तमान जो देखियो 2005 मसियार पाखा पाखी 2 डिकेड्स बैक बट स्टिल इट इज रिवैम्पिंग दैट इज व्हाट विथ एवरी अदर स्कीम्स क्वेश्चन जो परीक्षा रे आसीबो हला समस्त मन देख सुन क्वेश्चन जो परीक्षा रे आसीबो सेटा बेसिकली रिलेट करियो कहा संगे रिलेट करियो तुमरा न्यू गवर्नमेंट रे कोन गवर्नमेंट ताको रिवैम्प कला माने न्यू एडिशन कोन हला प्लीज मेक ए नोट खाता पेन धरि बसो डेफिनेटली विल गेट इट नो आगो देखिबा मेजर न्यू डेवलपमेंट्स कोन हेची ए न्यू डिस्ट्रिक्ट कार्ड ब्रदर मु कहली कि वर्तमान इस हमर चलसी जीएस ऊपर मैथ्स ऊपर जो दिनसटा हला धीरे धीरे ताको आनिबे सो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज आस्क द रिलेवेंट क्वेश्चंस डेफिनेटली आई विल लुक इनटू if you want then you can you text me individual I can guide you हला whom to refer right okay thank you वर्तमान एटा मन देखि सुना और लेख ठीक अछि ए न्यू डिस्टिंक्ट कार्ड हला जदि हम देखिबा ए न्यू डिस्टिंक्ट कार्ड eligible senior citizens eligible senior citizens 70 and above will receive a new distinct card under AB PM-KISAN scheme प्रथम हला one by one note करी रखो न्यू डेवलपमेंट्स रे नंबर 1 पॉइंट कोन गोटे डिस्टिंक्ट कार्ड थिला आगुरु नथिला माने गोटे इंडिविजुअल कार्ड डेफिनेटली कार्ड जो माने एलिजिबल सीनियर सिटीजन 70 एंड अबव सेमान को दिया हला सेकंड पॉइंट सो दिस पॉइंट वी हैव कवर्ड सेकंड पॉइंट रे केवल तुम खाली की पॉइंट्स गुडा लिखिनी senior citizens with family already covered by जो माने कवर्ड करचंती हला आयुष्मान भारत रे रिसीव एडिशनल टॉप अप एटी मु लिखले एडिशनल टॉप अप कवरेज ऑफ 5 लाख पर ईयर माने एमित रे गवर्नमेंट 5 लाख दोची पुनी आहुरी 5 लाख टका अधिक ठीक अछि टॉप अप सो ऑल टोटल केते रहला सम ऑल टोटल रहला सम 10 लाख तमर क्वेश्चन कोन आसीबो कि दे देथिबो 12 लाख हला सेटा नै तमे 10 लाख देखियो हला ऑल टोटल 10 लाख कवर दिस टॉप अप will be for them and they will not have to share it with other family members under age 70
ठीक अच्छे जो मैंने यहाँ कौन हम केवल 70 एंड एबव से अदर फैमिली मेंबर्स मैंने सेटा शेयर हो पारिबन सो मिनिमम क्राइटेरिया शुड बी रिमेम्बर्ड फैमिली रे केवल जो मैंने 70 आउ एबव थिबे ठीक अच्छे थर्ड रे as per new addition in family coverage senior citizens who are not part of an जो मैंने जदि न्यू कवरेज देखिबो हेलो संजय हाय हाउ आर यू थैंक यू ठीक अच्छे देखिबा न्यू एडिशन फैमिली कवरेज जो माने हु आर नॉट पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग माने एबीपीएमजे जो माने नथिबे कवरेज विल बी प्रोवाइड ए कवर अप टू आरएस 5 लाख पर ईयर ऑन फैमिली बेसिस जो माने जदि धर सपोज माने by any reasons samane they were not added in the scheme suppose hei nahanti or they are not added but family माने जदि जने हेई पारुनी इंडिविजुअली देन फैमिली हिसाब रे भी बेसिस रे भी से तार सुविधा पाई पर कितने बड़ जिंसटा तक गवर्नमेंट सुविधा देछि हाउ मच हैसल फ्री माने जने जदि हेई पारुनी देन विथ एडिशन जदि एडिशन नहीं परिबो माने तार निजर करनी फैमिली बेसिस रे से भी से एई स्कीम रो फैसिलिटी अवेल कर परिबो राइट वेरी गुड so senior citizens who are already benefiting from the public health insurance schemes जो माने senior citizens like the central government को माने पाइबे who are eligible मन रखो who are eligible ठीक है जी central government health schemes ex servicemen जो माने ex servicemen contributed health schemes Ayushman central armed हैला police force से माने जिबे then central armed force then have the options either continue with their current schemes or opt for ABPMJ माने ऑलरेडी जो माने गवर्नमेंट जॉब होल्डर अछंती आइदर से माने आकु ऑप्ट करि परिबे निजर जो पीएसयू माने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तांकर अछि तांकर से स्कीम करि परिबे और से माने एबीपीएमजे हला आयुष्मान भारत रो स्कीम टा यूज करि परिबे कितने बढ़िया ऑप्शंस गवर्नमेंट रखि छै हला दिस इज फॉर दोज हु आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेसिकली एंड फॉर प्राइवेट इंश्योरेंस होल्डर्स जदि हमें गवर्नमेंट देखले प्राइवेट कोन रहइबो फॉर द प्राइवेट इंश्योरेंस होल्डर्स सीनियर सिटीजन्स हु आर कवर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है और द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जदि जो माने देखिबा कि प्राइवेट इंश्योरेंस जो माने सीनियर सिटीजन्स जो माने रहले हु आर कवर्ड प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज और द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस आइदर से माने प्राइवेट इंश्योरेंस रे जेमति मु कभी केयर जेमति कभी स्टार हेल्थ है आइदर से माने सेतरे कवर हेबे और द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस रे है प्राइवेट एम्प्लॉयज माने कथा प्राइवेट इंश्योरेंस होल्डर जो माने रहछन सो गवर्नमेंट एटा बेसिकली पीएसयू सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर these are the segregations okay ekna bahut important मन रखो these are the new recent incorporations by the government of India right next hame jiba hope it is clear to everyone thank you Sanjay thank you hope it is clear agu badiba next scheme hela national health mission hela next scheme is your national health mission देखिबा National Health Mission जदि हमें देखिबा National Health Mission is an public health is a state subject जदि हमें देखिबा कि टोटल ऊपर है National Health Mission it is an public health subject ऊपर this is basically in public health National Health Mission okay so government कौन करछि is a state subject जेमि state subject माने what do we mean by the state subject एटी परीक्षा दर क्वेश्चन पचला state subject माने it is basically it is the governments आमे माने government चूज करूछु आमे इलेक्शन माने सिलेक्ट करके इलेक्ट करके आमे तांको पठाउछु सो इट इज देयर प्राइम रेस्पोंसिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द सिटीजन्स हेल्थ ठीक अछि सो हेल्थ इज प्रायोरिटी हेल्थ जो कंट्री हेल्थ इज वेल्थ सो दैट इज व्हाट राइट हेंस द रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस हला मेडिकल असिस्टेंस टू patients of all income groups is of respective state or union UT governments basically state or UT governments the NHM is the overarching umbrella for the public health programs basically public health programs like your rural and urban India basically rural and urban India it primarily aims to reduce primarily aims to reduce the maternal and child mortality rate so national health mission NHM मन रखो एटा हैला प्रीलिम्स में जेतिक इंपोर्टेंट सरू सरू संगे संग मेंस में तम मन रखो एटा सब जगह तम पई लागिबो बहुत काम रे दिस इज very important schemes आउ सब वर्ष जो नुआ एडिशन होछ डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल ओके क्वेश्चन आंसर तो प्रथम कोन रहइबो इन्फेंट मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टालिटी रेट ता माने कोन IMR हैला इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट मन रखम गोटोड करके लिखि दियोछ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट prevent communicable and non communicable diseases का करियो
communicable diseases and non-communicable diseases. That will separate. Next slide रे मुझे कहबी तुमको what are the diseases that comes under your communicable diseases and non-communicable diseases, right? Example धर मु देली communicable diseases जेमते tuberculosis, TB, leprosy, cancer and diabetes, right? जदि हमें देखिबा communicable diseases and build a robust public healthcare delivery framework जोटा कि बहुत बड़ गोटे healthcare delivery सेटा definitely करिवो. The National Rural Health Mission जदि देखिबा NRHM and National Urban Health Mission एटी मन रख National Rural Health Mission NRHM and National Urban Health Mission NUHM दीटा मन रख. rural पे गवर्नमेंट कोन कला, rural पे अलगा कला, this is for the rural हला and this is for your urban, right? Because वर्तमान जदि हमें देखिबा कि पाखा पाखी जदि हम कहबी approximate 40-60 इंडिया आसलानी जदि accurate रे देखिबा 37-38%, but actually urbanization वर्तमान देखिबा जदि ओटा कि apprehend करा होची इंडिया रे 60% rural अछन 40% urban जोटा कि जदि हमें previous census रे देखिबा एमते तो 5 वर्ष लेट हे गेलानी ताले it was only 34%. Now it is close to 40%, even if more than some are guessing, right? So support states and UTs have strengthened their healthcare systems so as to provide universal access to equitable, affordable and quality health services. है ना, universal access to quality health services. So हमें कौन जानने वर्तमान ये जो new development NRHM है ला national health mission रे both rural और urban को समान divide कले and accordingly quality service provide करे पे माने 40% लोग जो माने urban रे रोचन सेमान भी available कर परिवे plus rural. So that should not be any overlapping on the distributing the government schemes and the budget. I mean budget allocation fund allocations that has to be kept in mind. Please make a note of this. है एटा मन रख जिन रूरल अर्बन को डिवाइड कराला. रूरल वर्तमान इंडिया रे 60% अप्रोक्सीमेट अछंती एमाने अछंती केते 40%. एनालिसिस करी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रे एमती ही से माने दोचंती. एज ए ब्यूरोक्रेटिक एंगल तमर कोन हबो तमे गोटे डाटा रु तमे संग्रह करिवो एनालिसिस करिवो. इट इज नॉट दैट कि तमे माने ओनली फॉर द whimsically करिवो जम्मा घुसनी तमे बुझो जिंसटा को जदि तमे बुझुछो देन फैक्ट विल रिमेंबर ऑटोमेटिकली, राइट? ठीक अछि. आगो बढ़िबा. द स्कीम्स लॉन्च्ड कबे हितला अंडर द NHM आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट होला टू ऑल इनकम ग्रुप्स विजिटिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, ओके, एट सब डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एज कौन द स्कीम्स जोड़ा हला लॉन्च गवर्नमेंट ये रे ना सब इनकम ग्रुप को से धनी हो गरीब हो मध्यम धरण हो अति रिच हो समस्त अवेलेबल. वर्तमान जानिबा से स्कीम्स गुडा कोन हला वन बाय वन मन रखो एडा बहुत वेरी डिटेल रे मु जाउची मन रखो एडा. प्रथमे कोन देखिबा गवर्नमेंट रे कोन कोन करिछि ए रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ. ठीक अछि. रिप्रोडक्टिव मैटरनल हला नियोनेटल चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ सब जिंस रो एडोलेसेंट माने जो माने युव वर्ग रो नै कि छुआ नियोनेटल अति कुन्नी छुआ प्लस योर रिप्रोडक्टिव जो माने रिप्रोडक्टिव एज रे जो माने मदर की योर मेल हो कि फीमेल हो एंड मैटरनल जो माने ऑलरेडी जो न्यू बॉर्न बेबीज माने करछन. सो दैट इज व्हाट फॉर देम. व्हाट आर द स्कीम्स? लेट अस नो. स्कीम्स कवर्ड अंडर सच पैरामीटर आर देखो मु डेली फ्रीक्वेंटली नियनी बट जेति की निये कवर करे जीएस पार्ट रे माने खास करी की करंट अफेयर्स पार्ट रे सेति क्वालिटेटिवली नि कम समय रे मापेरबे बट रबस्टली बिकॉज़ गोटे जिंस योर गवर्नमेंट साइड रो स्टडी करी की कल्चर करी की ताकू करिवे एक्सप्रेस करबे. इट इज टू टाइम टेकिंग एंड आई होप तुम खाली एति एक्सपेक्टेशन तमे पढिला बेले खाता पेन धरि के बस नोट कर ताकू जिंस. ठीक अछि. जत्ते प्योर थॉट्स और जत्ते पॉजिटिव थॉट्स रखिबो डेफिनेटली विल सक्सीड, राइट? गॉसिपिंग व्हिस्परिंग ए सब जिंस दूर रहो. एग्जाम परफॉर्मेंस करियो टिके मेडिटेशन करो डेफिनेटली एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल हो, राइट? मन रख तमे हमें जहां भाबीबे हमको सेटा मिली, राइट? बट वी शुड हैव ऑनेस्ट एंड प्योर थॉट्स. देखिबा वन रे कोन जननी शिशु सुरक्षा कल्याण योर कार्यक्रम जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एटा आसिला. सेकंड रे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. थर्ड रे ए सब स्कीम्स मन रख खाली कान रे सुनै कि सुनो आउ ताको बार बार टिके पढो. एग्जाम रे आसिल जदी भी गोटे पॉइंट आसे चटना तमे धरनो. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम. देन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. बर्तमान ये तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बर्तमान घरे घरे बुली के सामने पोलियो. ठीक अछि. पोलियो टीबी एला छोटे छोटे सब आंगनबाड़ी दीदी माने सब दोचन पोलियो छोटे छोटे छुआ वाला पोलियो टीबी अप टू टिल 5 इयर्स किड्स चाइल्ड माने को दोचन समाने हैला. पोलियो टीबी हैला हेपाटाइटिस ठीक अछि. ए सब जिंसोटा दिया हो देखतो सब जगह वर्तमान इंडिया रे एटा कवर होछ. एवरी वेदर इट इज कर्नाटक और तमिलनाडु और ओडिशा और बिहार और झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान सब जगह रे कवर होछ जिंसोटा.
मिशन इंद्रधनुष दैट इज वेरी इंपोर्टेंट इंद्रधनुष एथरे आछि जननी सुरक्षा योजना देन प्रधानमंत्री योर सुरक्षित मातृ अभियान है माने यू नो फॉर वुमेन फॉर मदर मानक पई लैक्टेटिंग मदर मानक पई वेरी इंपोर्टेंट स्कीम दिस वन because our mission is to विकसित भारत everyone should feel empowered प्रथम हेल्थ रहा प्रायोरिटी हेल्थ हेले जाके हमें मनुष्य काम करके आगु को देश को आगु नब देन नवजात शिशु सुरक्षा कर्म योजना कार्यक्रम योजना देखो नवजात शिशु न्यू बॉर्न बेबी को भी अच्छी नेशनल प्रोग्राम फॉर द फैमिली प्लानिंग देन लक्ष्य प्रोग्राम लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट माने जो माने डिलीवरी समय लेबर रूम माने डिलीवरी समय जेतला होची बहुत जगह देखा होची बिकॉज ऑफ द अनहाइजीनिक कंडीशंस दैट द डेथ्स ऑफ वुमेन और द चाइल्ड इन्फेक्शन हो जाए और सेटा प्रोलॉन्ग करे किछ मास वर्ष भीतर समाने फाटल अकर्स डेथ अकर्स हुए सो ता पई गना लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट गवर्नमेंट किते जिंस देखो मेटिकुलसली डिजाइन हिचे जिंस बडा ओके नेक्स्ट सेकंड रे कोन सेकंड नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम गोटे पार्ट गला देन कम टू द नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम कोन आछि नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हला आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स देन योर एमए मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम इन इन्फेंट एंड यंग फीडिंग माने जेतरा लैक्टेटिंग शिशु थिबो हला ता चाइल्ड पई सेही प्रोग्राम रे कोन अछि देन नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस हला एंड नेशनल प्लस इनिशिएटिव प्रोग्राम फ्लोरोसिस माने फ्लोरीन कंट्रोल हला फ्लोरीन को कंट्रोल करिया पई बिकॉज़ लैक्टेटिंग मदर पई गोटे फ्लोरीन रो मात्रा दैट मे डिस्टर्ब्स द मिल्क सेटअप हला एंड बॉडी रे जोटा क्रिएट हुई and that also since your child baby is sucking from the mother dependent on the mother so that is why both mother and the child they can be affected so ए जो गवर्नमेंट कोन कला जो जगह रे फ्लोरीन कंटेंट अधिक अछि सेही जगह रे कोन कला फ्लोरोसिस प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ योर फ्लोरोसिस राइट देन सी रे नेक्स्ट आछि कम्युनिकेबल डिजीजेस कोन आछि कम्युनिकेबल डिजीज रे इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम है देन ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम देन लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम लेप्रोसी इराडिकेशन पे हमर जेमते एठी सब डिस्ट्रिक्ट रे काटक गुटे लेप्रोसी पे गोटे सेपरेट बनाई ब्रिटिश टाइम ताकू पुनी और रिवैम्प करी समान करा होची ओके सो लेप्रोसी आगुर कोन थिला लेप्रोसी के समान हेड करते बर्तमान पीपल आर अवेयर अबाउट दैट वन ओके फैमिली समान केयर नि होची और ताकू गवर्नमेंट स्पेसिफिकली ताकू एड दिया होची ताकू हेल्प करा होची फूड शेल्टर एंड फॉर देयर चाइल्ड डेवलपमेंट आल्सो राइट नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम वेक्टर बॉर्न है लाइक वेक्टर बॉर्न में तमर आसु मागु कभी मलेरिया जॉन्डिस ए सब आसो देन पोलियो पल्स पोलियो प्रोग्राम वायरल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एड्स भी आसु देन नेशनल रैबिस कंट्रोल प्रोग्राम देन नेशनल प्रोग्राम फॉर कंटामिनेटेड एंटी माइक्रोबायल है एंटी माइक्रोबायल नॉन कम्युनिकेबल की आसु टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर डिजीजेस राइट देन प्रोग्राम फॉर योर ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्युपेशनल डिजीजेस कार्डियोवास्कुलर हार्ट पई भी अछि हैला कार्डियोवास्कुलर माने योर बेसिकली हार्ट पई तमर अछि हैला जस्ट सी दैट वन जस्ट हैव ए ग्लिम्स हैला नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ डिफनेस माने जो माने बधिर माने जाको सुबा होएनी हैला द डिफनेस पई प्रोग्राम माने गवर्नमेंट से माने को दोची सम स्ट्रिंग्स आर अटैच्ड सो दैट दे कैन हियर प्रॉपर्ली से माने पई स्कूल भी रोची देयर इज अ डिफरेंट सेपरेट डीप स्कूल आल्सो ओपन आल्सो this is kind of the intensive care but taken by the government right national mental health program then your national program control on blindness and visual impaired blindness में तुम निजे देखो सिविल सर्विस एग्जाम रे यूपीएससी रे सबुतरे सामाने बसुछन राइट ब्लाइंड पीपल्स आर देयर प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम आल्सो देयर किडनी पई डायलिसिस माने बेसिकली किडनी रिलेटेड डिजीज किडनी हला किडनी डिजीज किडनी है ना किडनी रिलेटेड होछ किडनी रिलेटेड डिजीज नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली पीपल जो माने एल्डरली अछन एल्डरली पीपल पे नेक्स्ट नेशनल ओरल हेल्थ एंड द प्रिवेंशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजुरीज सपोज तुमे मदर माने काम करते देहरे बडा निया लागि जाय कि काठर चुली रे बसते निया लागि जाय कि गैस रहि जाय से माने पई बर्न इंजुरीज पई भी देयर वेरी पुअर पीपल से माने दे कैन अवेल दिस स्कीम्स जदी हम पाखरे इंफॉर्मेशन अछि डेफिनेटली विल आस्क इन द गवर्नमेंट in your hospital sector definitely it will be work right next support under lastly support under NHM states or UTs रे देखिबा previous of post free services such as maternal health कोन होची maternal health child health adolescent health family planning बर्तमान बहुत जरूरी इंडिया रे गोटे पॉकेट रे देखा होची गोटे घरे माने 8-10 टा छुआ बर्तमान हैला जदी अनाना पर there are some pockets there are some few communities that do not have any care for the national growth or national impact even if the quality life
सो सेटा पे भी नेशनल फैमिली प्लानिंग रखा है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड फॉर द मेजर डिजीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस एचआईवी एड्स वेक्टर बॉर्न डिजीजेस लाइक ये मलेरिया डेंगू काला जर एंड लेप्रोसी एटा परीक्षा रे क्वेश्चंस वेक्टर बॉर्न डिजीज रे की को माने आसुछन दिस इज एन क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स राइट की आसुछि मलेरिया डेंगू काला जर एंड लेप्रोसी है मलेरिया डेंगू काला जर एंड लेप्रोसी these are the cover in your vector borne diseases right next हमें जीवा नुआ प्रधानमंत्री आवास योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 प्रधानमंत्री आवास योजना तुम कौन देखो हाउसिंग फॉर ऑल मिशन दिस इज बेसिकली एन हाउसिंग स्कीम दिस इज बेसिकली हाउसिंग स्कीम्स है हाउसिंग स्कीम्स कौन कौन गवर्नमेंट वर्तमान घर तो जो टाइप रो जस्ट वर्तमान जो टाइप रो गवर्नमेंट वर्तमान जो टाइप रो माने ग्लोबल वार्मिंग होची तो घर समस्त पई दरकार एवरीवन नीड्स यो एंड शेल्टर कौन देखिबा वर्तमान एइट रे गवर्नमेंट कौन न्यू इनकॉर्पोरेशंस करिछि देखिबा आगु को प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 that is PMAY 2.0 that is urban ठीक है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन mainly the main objective of the प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 is basically to provide purchase affordable पक्का हाउस में कौन कहली पक्का हाउस माने छात थिबो पक्का हाउस हैला माने रूफ पक्का माने हिंदी रे हमर इंग्लिश कहले ताको रूफ थिबो हैला रूफ हाउस टू 1 crore पुअर एटी लिखिनी एटा सब क्वेश्चन जोड़ा जोड़ा मुंडले बुलो कीवर्ड सोडा देखि दबो हैला परीक्षा पचर तुम कोडी जीएस रे तुमको जीएस रे कोडी फैमिली करबे सेटा हम कहि देबे दिस इज योर 1 crore पुअर and middle class families in urban areas over the next 5 years हैला next 5 years में urban areas रे आसुची the schemes provides financial assistance up to 25 lakh financial assistance up to 25 lakh and interest subsidy on home loans families with annual income up to 9 lakh ठीक है होम लोन से 9 लाख जार तांको प्रोवाइड करिवे और प्लस कवर द नेक्स्ट 5 इयर्स प्रोग्राम से माने कवर करिवे बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम्स कोन एटा नोट करनबो 1 crore फैमिलीज 5 इयर्स कीवर्ड रे फाइनेंशियल असिस्टेंस केते अप टू 25 लाख एंड इंटर जदी ए जीवन उत्कल हॉस्पिटल पाखरे ए भुवनेश्वर रे ठीक है उत्कल हॉस्पिटल जोटा आइछि हमर ठीक है नीलाद्री बिहार सेपाटे तुम देखियो सेठी माने गवर्नमेंट बहुत बड़ बड़ घर करि सो लोक पुअर माने को देछि जो माने बेसिकली स्लम ड्वेलर्स माने दैट इज व्हाट फॉर एग्जांपल मु कहल तमे सेठी लिखिला बेले तमरो मेंस रे लिखिला बेले कि प्रीलिम्स रे जे कहला बेले ए सब जिंसरा चूज कर परिबो ना जस्ट माइंड तमे मने पके परिबो ठीक है उत्कल हॉस्पिटल बहुत बड़ बड़ बिल्डिंग सब दिया छोट छोट 1 बेडरूम और छोट छोट 1 बेडरूम डाइनिंग आ ये नहीं हैला सो एनुअल इनकम समानकर 9 लाख समान को भी सुविधा मिल परिबो राइट with interest subsidy interest जो मिलियो दैट इज इन सब्सिडाइज रेट राइट बेनिफिट्स कौन ए स्कीम रो बेनिफिट होची interest the following are the benefits from the scheme the interest subsidy schemes जदी हम देखिबा the schemes provide 4% interest subsidy up to 1.8 lakh 4% interest subsidy दबा 1.8 lakh home loans up to 8 lakh tenure हैला 8 lakh tenure for 12 years this facility is available all EWS जो माने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS कहबा हैला EWS इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस LIG ठीक अछि लार्ज इनकम ग्रुप रे एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स MIG हैला LIG MIG हैला माने LIG वन का लार्ज इनकम ग्रुप MIG हैला मिडिल इनकम ग्रुप नेक्स्ट बेनिफिट्स कोन देखबा अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप AHP affordable housing partnership रे in this government provide central assistance up to kete government kete दोची पाखा पाखी 1.5 lakh for purchasing house in affordable rate पाखा पाखी 1.5 लाख टका गवर्नमेंट प्रोवाइड करछि केते बढ़िया हैला 1.5 लाख टका गवर्नमेंट प्रोवाइड करछि affordable housing partnership scheme रे next beneficiary led construction हैला BLC beneficiary led construction under this eligible EWS families with annual income up to 3 lakh जो मानकर annual income up to 3 lakh given financial assistance up to 2.5 lakh directly into the bank accounts है ना तंग बैंक अकाउंट्स को 2.5 lakhs directly constructing a new house on their available land है ना जोड़ा कि 2.5 lakh थी कि समान को हेल्प करछि तंकर निजर जागा रे समान निजे घर करि परिबे 2.5 lakhs यानी इमेजिन कितने सुंदर जदि हमें देखिबा कि हाउ बेनिफिट्स केते बढ़िया स्कीम से गुडा गवर्नमेंट केते हेल्प करछ लोक राइट एलिजिबिलिटी कोन अच्छा एकु समस्त को मिले तो समस्त नै जिवे यार एलिजिबिलिटी कोन
The family who have applied avail such schemes should not have any pakka house. जहार घरे गोटे पक्का हाउस नथिबो से माने अवेलेबल करि परिबे हला पक्का हाउस एनीवेयर इन द कंट्री तांकर कंट्री रे कोनोसी जगह तांकर गोटे पक्का हाउस नथिबो. दिस इज एटा हला प्रथमे. देन ईडब्ल्यूएस रे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस बेसिकली हला एनुअल इनकम अप टू 3 लाख जदि हम देखिबा एनुअल इनकम अप टू 3 लाख हला तांकर एनुअल इनकम केते हितबो अप टू 3 लाख. Then LIG low income group annual income up to 3 lakh to 6 lakhs तांकर केते हितबो 3 लाख रु 6 लाख हितबो. EWS कैटेगरी गोटे गले जोन का इनकम 3 लाख थिबो एटा मन रख. दिस आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर क्वेश्चंस हला प्रीलिम्स में. दिस आर वेरी इंपोर्टेंट मु कहि दोची हला 3 lakhs थिबो. देन लो इनकम ग्रुप रे केते थिबो 3 lakhs रु 6 lakhs थिबो. देन मिडिल इनकम केते थिबो 6 लाख रु 9 लाख थिबो. लो गला हला LIG लो गला. देन आउ हला एटी MIG ए तीनटा हायर इनकम ग्रुप के समय रखना लो मिडिल को रखिछन हला लो मिडिल को. सो दीज आर द बेसिकली जदि हम देखिलिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 हला मन रखबे. दीज आर द क्वेश्चंस आउ जोटा कि बेसिक्स वेरी मु जिस्ट गोडा त मन दोची दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जाम्स. नेक्स्ट एस वन न्यू PM Gati Shakti, the all-time favorite questions for the in competitive exams. सब competitive exams से प्राय गति शक्ति इंटरव्यू रे पचरे सब जिंस रे. वर्तमान आपरे recent incorporations कोन हे देखिबा PM गति शक्ति ऊपर तमे देखछो कोन एटी गोटे NH जाईची देन एटी पोर्ट देची देन एयरक्राफ्ट अछि देन योर wind power अछि हैला सेल देन योर अदर सेक्टर इंडस्ट्रीज आल्सो. जानिबा कोन PM Gati Shakti यदि देखिबा it's basically a digital platform designed to bring various ministry PM Gati Shakti man one of the largest the schemes that integrate various sectors economically, various sectors in our economy. आगु देखिबा including the railways and roadways हला रेलवे माने रेलवे रोड को इंक्लूड करले to ensure integrated planning हला to ensure integrated planning and coordinated executions of infrastructure project hela coordinated your infrastructure project. Good morning Millie, good morning. The initiative aims to provide kon karibo seamless and efficient connectivity hela seamless and efficient connectivity for the movement of people, goods and services across various modes of transport hela various modes of transport, thereby enhancing last mile connectivity and reducing travel time hela last mile connectivity and reducing the travel time. देखिबा कोन PM Gati Shakti जदि हम देखिबा कि incorporates the infrastructure schemes of various ministry and state governments माने देखो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स को माने जदि हम देखिबा कि हमरा जो अच्छी हमरा फेडरल सिस्टम हला जो यूनियन ऑफ स्टेट से जिंसटा को माने एठी इनकॉर्पोरेट करतन से कांसेप्ट को माने स्टेट गवर्नमेंट माने सेंट्रल गवर्नमेंट in coordination with the state governments or vice versa, such as को जिनसरे स्टेट गवर्नमेंट्स वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स कोन भारतमाला स्कीम्स हला वी नो सागरमाला ठीक अछि माने रोड आ तापरे आसिला कोन मेरीन ठीक अछि. सागरमाला इनलैंड वाटरवेज हम जानछन जोटा कि NWW नेशनल वाटरवे जोटा कहंती NWW कोटा नेशनल वाटरवे जार हेडक्वार्टर कोठी नेशनल वाटरवे एटा गोटे कंपनी एटा गोटे गवर्नमेंट रो डिपार्टमेंट यार हेडक्वार्टर कोठी हेडक्वार्टर इज एट नोएडा यूपी रे अछि. इनलैंड वाटर राइट. So waterways, dry land ports and Udan schemes माने we are again integrating towards Udan means your aircraft system aviation sector right. Udan schemes additionally 434 project पाखापाखि 434 projects 434 projects under 3 economic corridors 3टा economic corridors रे हला of Ministry of Railways have been evaluated and shared with PMO पाखा shared with PMOs and their energy mineral cement का energy mineral cement high traffic density corridors and rail saga इत्ते बड़ माने तुम इतरे भाबो रेलवे रोड योर पोर्ट्स ओके सब जिंस इतरे इंक्लूड होची गवर्नमेंट रो मेन. पुनी आगो बढ़िबा दैट ए डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान बेसिकली यदि हम देखबा डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान गोटे बना होची टू पोर्टल इज बीइंग डेवलप्ड टू एक्सटेंड PM Gati Shakti district okay
Radhe Radhe, good morning, good morning, good morning. How are you, Pradipta? Very good. After a long time, I'm saying, okay. PM Gati Shakti to district level. This portal will district authorities in collaborative planning, infrastructure, gap identities, and some implementation. Right? The PM Gati Shakti, it is a national master plan, has onboarded 44 central ministries, 36 states, UTs, total 1614 total layers, and have also been integrated. To ensure data accuracy, key infrastructure ministries have finally standard operating system. Standard operating system no problem, no problem, no problem. Right? A 3-tier system. SOPs for 8 infrastructure ministries and 15 social sectors have been notified with development containing other ministry states. So it is 6 principles. Integrated development, your multimodal infrastructure, last mile connectivity, expedited land acquisition, minimized, then reduced ecological impact. These are the things, right? Just a second. Acha, these are the 6 principles super PM Gati Shakti hoji. This is for your information, right? Next as well, important. Okay, Vaibhav scheme, Bharat Adyogik, okay, Vikas Yojana. बहुत बढ़िया जिनसटा मतलब PM Gati Shakti परे ये सब important point एवढं देखी देवा. Okay, बहुत important. Then Vaibhav, Bharat Adyogik Vikas Yojana. है ना, Bharat Adyogik Vikas Yojana. देखिए the Bharat Adyogik Vikas Yojana scheme, जब हम देखिए its schemes is an 33,000, pakapaki 34,000, 33,660, or let's say 34,000 crore schemes. Central sector initiative aim to developing 100 investment ready plug and your play industrial parks across the India, across India, running financial year 2026-27, and 31-32 provides financial assistance up to 1 crore per acre. कौन इसी ये नोट करिए 1 crore per acre to transform the country into globally competitive manufacturing hub. Manufacturing hub करिया पे इंडिया को making India manufacturing hub. ठीक है जी, manufacturing sector को boost up करिया पे boosting manufacturing sector. ठीक है जी, boosting manufacturing sector, competitive manufacturing sector थे जो कौन है 1 crore per acre transform जो देखा हो 1 crore rupees दिया हो per acre. So department कौन है for promotion of industries and internal trade, DPIIT मन रखा है international trade. Ministry of Commerce and Industry, Government of India has released the detailed operational guidelines for the implementation of the Vaibhav scheme. So इतना कौन है ministry को ministry is Department of Promotion and Industry and Ministry of Commerce. एडा मन रखा. These are the questions. को department, Ministry of Commerce, Government of India and Department for the Promotion Industry Internal. These are the government departments, government department involved, government departments involved. Who are the involved in the government department under the schemes? Vaibhav has been designated strengthen India's manufacturing ecosystem through development of integrated industrial infrastructure aligned with the objectives of Make in India. So ये जो program टाको scheme टाको खास कर include करा हला Make in India scheme संगरे integrate करा हला Make in India scheme संगरे integrate करा हला. ठीक है जी, please make a note of this. Vaibhav scheme को कहाँ संगरे करा हला Make in India, very recent insert हमको चाहिए, very recent Make in India program संगरे को include करा हला, right? Designed to strengthen India's manufacturing. कहेंगे manufacturing ecosystem को strengthen करिया पे तो very objective this is, very objective. इटा बहुत recent scheme था, right? Very objective this one. So कौन हला PM Make in India खास करा हला Vaibhav, PM Gati Shakti and the government's broader vision for positioning India as a global competitive manufacturing destination. जब हमें देखिए आज भी हला कि ये सब स्कीम गोटे इंटीग्रेट करा होची जदी गोटे स्कीम्स रे किछि प्रॉब्लम ला आ गोटे स्कीम रु फंड ताको चलै परियो, सो दैट कंटीन्यूअस रेगुलेशन कैन नॉट बी स्टॉप्ड,
सेटा हला बहुत बड़ जिंस गोटे वर्तमान मन रख 5 स्कीम्स ऊपर जोटा कि रिसेंट एडिशन हेची पीएम गति शक्ति मेक इन इंडिया प्रोग्राम ऊपर हला एंड द गवर्नमेंट ब्रॉट अ पोजीशन द ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग सो इंडिया को ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग हब बनिया पे दीज आर द सब जंग जदि हम देखिबा कि दीज आर द एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट The scheme provides for development of 100 industrial parks. कौन दला 100 industrial park, right, of 6 years from 2026-27 है to 2031-32, 2026-27 ने कि 31-32 with a total financial outlay approximately जदि हम देखिए financial outlay approximately 33,660 crore financial outlay इतनी हमर दियाला. In the first phase 50 industrial जदि प्रथम phase wise दिबा वर्तमान first phase रे कोन होची 50 industrial park will be taken up through the challenge based competitive schemes है ना 50 industrial parks has been taken up the challenge based competitiveness selection process the guidelines जदि देखिबा the guidelines lay down a comprehensive framework covering eligibility criteria कौन eligibility criteria project selections methodology funding structure है ना funding structure governance architecture, monitoring system, and implementation modalities for industrial parks under the scheme. Under the scheme. The major focus of the scheme is on creation of investment ready. Our major focus on investment ready. Eta gote tomar questions asibo. Hala major focus prelims mein. This is a questions. Investment ready. Investment ready. Kaha upar investment karibo? Industrial ecosystem. Hala this ei parata bahut important. This is very important. Industrial ecosystem with plug and play infrastructure, multimodal logistic connectivity, reliable utility system, worker support infrastructure, digital governance system, and sustainable development feature, digital governance system and sustainable development features. Okay, these are the things. So एथि हम जानले कोन मेजर स्कीम्स रो आपरे इन्वेस्टमेंट रेडी रहला इंडस्ट्रियल ऊपर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ऊपर आ वर्कर सपोर्ट रहबो वर्कर जो माने काम करछन ताकू वर्कर सपोर्ट सिस्टम रहबो देन डिजिटल गवर्नेंस डिजिटल को वर्तमान डिजिटलाइजेशन के बहुत प्रायोरिटी दिया डिजिटलाइजेशन एंड आल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीचर्स दैट इज आल्सो वन इंपोर्टेंट पार्ट. The guidelines provide development of greenfield and eligible brownfield industrial parks है ना greenfield और brownfield industrial parks को दबो minimum land requirement केते रहबो जदि हम गवर्नमेंट तो दोछि minimum land requirement देखियो at 100 acres non hilly states एटा 80 पंडक एटा बहुत important question आसला. This is also very important to point to note. Please make a note कहा को रहबो hilly states एटी गवर्नमेंट ई प्रोजेक्ट कोन कला दीटा डिवीजन कला hilly और non hilly states और कोन रहला in hilly has been prescribed 100 acres of non-hilly states को 100 acres 25 acres of hilly states को 25 acres north eastern states with रहला की रहला north eastern states भी रहले union territories and smaller states ए माने भी इथरे इनकॉर्पोरेट से आसिले. The scheme also permits larger park establishment of larger parks schemes को जदि हम देखिबा it also establishment of जदि देखिबा of parks up to 100 acres. So इथरा में कौन जान ले hilly states तीनटा कहला तीनटा 3 groups रे non hilly states then north eastern states ए तीनटा बड़े hilly states जदि हम देखिबा कोठी सेंट्रल भारत रे माने ईस्टर्न इंडिया जेमति छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ओडिशा बहुत पार्ट रे अछि हैला इन योर महाराष्ट्र हैला अजंता सही जगह रे हिली स्टेट्स असला पुनी नॉन हिली स्टेट. So 3 categories. Please make a note of this. तीनटा categories गवर्नमेंट रे करी के इथरे इंडस्ट्रियल दला इथरे केते आसी 100 एकड़ हैला नॉन हिली स्टेट्स रे जो माने जोडा समतल जगह you can say the plain areas right and plain or plateaus 25 असला हिली स्टेट्स रे स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट पाई भी अछि आ जदी सेथरे देखला गवर्नमेंट बडो सेक्टर जेमति मु कहबी ना त्रिपुरा की मणिपुर रे निहा होछि त्रिपुरा की मिजोरम रे एटी वर्तमान कोन होछि त्रिपुरा रे वर्तमान गैस फील्ड बाहर छै एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल गैस तो गवर्नमेंट सेठी बडो जगह नला नेशनल यूनियन टेरिटरी जेमति गवर्नमेंट गिल फील्ड नेली अंडमान निकोबर यूटीज अंडमान निकोबर वर्तमान गवर्नमेंट पाखा पाखी 4000 कोटी टंकार प्रोजेक्ट बना होछि ठीक अछि.
सो दैट इज पे गवर्नमेंट सेठी कहला 100 एकर्स रो समान जागा नै कि वर्तमान एनजीटी जेमती रोक लग वर्तमान सुनो एटा मन देखि एनजीटी वर्तमान अंडमान निकोबार ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट रे माने ताको स्टे ऑर्डर दे दी कहीं ना तमें एते गच्छ सफा करछ बट नाउ देयर इज एन कोअलिशंस माने आई मीन अंडरस्टैंडिंग बाय द गवर्नमेंट कि हाउ इट इज नेसेसरी जदी यूरोप रु जदी चाइना रु जापान रु कि फिलिपाइंस रो जहाज अछि सेठी हब नेबे सो कंट्री केते लोक पार्क बनले सेठी एयरपोर्ट बनले केते लोक एम्प्लॉयमेंट पाइबे केते जिंस से एरिया डेवलप हो सो यू कैन यूज द रिसोर्सेस ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हैज टू बी compensate for that and also government is negotiating with the NGT by understanding how it is importance in the economic sector in the economic point of view and for the livelihood for the people and the youths okay basically आगे देखिए under the challenge based selection your framework proposals will be evaluated objective parameters including multimodal connectivity sustainability quality infrastructure industries ecosystem policy facility readiness and long term तो एटा को मुझे हमें डिस्कस करले हैला 25 कोर्स एठी मु लिखि दोची नोट रे गोट लिखिनियो नोट रे एनजीटी ट्रिब्यूनल जो नेचे दिस इज योर अंडमान निकोबार आइलैंड्स ठीक अछि बेसिकली अंडमान हैला अंडमान्स एंड निकोबार ठीक अछि निकोबार वर्तमान कोन होची निकोबार प्रोजेक्ट पाका पाकी 4000 करोड़ प्रोजेक्ट ठीक अछि एठी रहउची बेसिकली टू डेवलप पोर्ट हैला टू डेवलप ports हैला पोर्ट एयरपोर्ट देन योर इंडस्ट्रीज बेसिकली ए तीनटा को गवर्नमेंट एठी करा होची हैला एंड बेसिकली टू रिवैम्प इट इज दिया होची टू ऑब्जेक्टिव कोन यार ऑब्जेक्टिव हैला टू एनहांस इंटरनेशनल ट्रेड हैला इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करिया पे एठी करा होची गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस वन मेक ए नोट ऑफ दिस इंटरनेशनल ट्रेड को अंडमान निकोबार वर्तमान की लगई छी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मन रखो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज मेक एन ऑर्डर माने पॉज दे दी छी एटा बहुत बड़ा गोटे हिंदू आर्टिकल आस्थिला हैला ठीक अछि हिंदू आर्टिकल ता माने पढिबो मु शेयर कर दु तो वर्तमान एटा को नै कि गवर्नमेंट वर्तमान काहे कि गवर्नमेंट इना ता संगे consensus करूची कि make them understand how it is important for the country's economic growth right आगु बढ़िबा बाइबब स्कीम सरला then next we will go for the last को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लास्ट वन इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लास्ट वन एटा तो बहुत पुराना स्कीम संगत के मन मन सर पुनी यस रिसेंट इनकॉर्पोरेशन बहुत इज सेही गोडा ही परीक्षा से पचरछन बहुत चालाक से क्वेश्चन बनेला बडे हैला you have to go in detail for that one what are the new additional added flavors हैला new addition to the schemes let us know प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 देखो एटी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 एटी देखली राइट जदि हमें देखिबा कि aimed at rural connectivity is basically it is aimed at rural connectivity this update the construction schemes target 25,000 unconnected habitations with all weather roads with an outlay all weather roads माने सबु टाइप रो माने all weather माने सबु रोड माने सबु ऋतु रे माने वर्षा हो खरा हो बेसी हला सबु रोड रे सबु वेदर रे रोड गुडा जंती भलो थि all weather road ता पे केते बजट पाखा पाखी 70,000 कोटी टका और 70,125 करोड़ कैन यू इमेजिन गवर्नमेंट इतरे केते कला फेज 4 रे हला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रे ठीक अछि 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशन मन रखा एटा गोटे प्रीलिम्स रो क्वेश्चन दिस इज आल्सो ए प्रीलिम्स क्वेश्चन तर अनकनेक्टेड केते 25,000 अनकनेक्टेड रोड्स ऑल वेदर रोड्स मन रखा एंड 70,000 करोड़ बजट अप्लाई हला एटा हला ऑल वेदर रोड एटा भी एटा मन रखा ऑल वेदर रोड हैला हेडी लिखि देबे कोन नॉट इंक्लूडेड द ऑल वेदर रोड नो सेडी भूल गेलो तुम सब जानि छ कि नॉट लगे भूल गेलो सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज फॉर द ऑल वेदर रोड से जो क्लास रे भलो कि सुनो से जिंस बडा ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे प्रदीप्त मु आनिबे ओडिसा स्कीम्स ऊपर हैला कारण इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट रो दीटा सरला पार्ट 1 पार्ट 2 मु नेक्स्ट आनिबे ओडिसा गवर्नमेंट स्कीम्स ऊपर हैला दैट इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट देखो हमें पढ़िबा फ्रिक्वेंटली माने टिके कम नै के जिंस बडा की बट क्वालिटी सबड मन रखो क्वालिटी पढ़ा पढिले तमर बेसी जिंस तुमको हेल्पफुल हो हैला प्रति वर्ष गवर्नमेंट रो सब जिंस चेंज होची दैट वी हैव टू वेरी मच विजिलेंट अबाउट दिस वन द यूनियन गवर्नमेंट चेयर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द proposal of the Department of Rural Development
क्या नेले डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैला डेवलपमेंट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केबे नेले 2024-25 नहीं कि ये जो टारगेट रखा 5 वर्ष 24-25 नहीं कि 2028-29 पर्यंत सच अ लॉन्ग टर्म राइट सो द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 60 केते एटा भी इंपोर्टेंट 62,500 किलोमीटर दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स अगेन मु कहूची वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स हला इजर ठीक अछि 62,500 किलोमीटर रोड फॉर providing new connectivity to eligible 25,000 unconnected habitations hela 25,000 unconnected habitations construction on your upgradation of bridges and the new connectivity roads hela bridges and new connectivity roads total outlay of the schemes pakapaki जोटा हमें देखले बे 70,125 कोटी टका मन रखो 62,000 एडी क्वेश्चन कोड आसीबो 62,500 किलोमीटर्स 62,000 तमु देथियो 80,000 नो 62,500 ठीक अछि और मैक्सिमम से माने 63,000 इन जदी देबे अप्रोक्सीमेट प्रोवाइडिंग न्यू कनेक्टिविटी एलिजिबल केते 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशन जोटा कि हमें लिंकिंग फॉर दिस माने 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस में माने ब्लॉक्स और विलेजेस और पंचायत तांकू कनेक्ट करे पे केते पाखा पाखी 63,000 किलोमीटर हला फेज 4 दिस इज द की पॉइंट हला नेक्स्ट details of the schemes last को details of the schemes में कौन देखिबा the details of the approval schemes cabinet कौन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना phase 4 हला phase 4 is launched in the financial year केते पई एडी मन रखो एटा गोटे क्वेश्चन 2024-25 रु 2028-29 माने आगामी आहुरी 3 वर्ष पर्यंत एटा रहिबो एई phase 4 ता परे आसीबो phase 5 राइट so phase 4 this is also important एटा सब जंग important this is very prelims ପାଇଁ सब important total outlay of the schemes केते 70,150 कोटी 125 कोटी टंका सेंट्रल गवर्नमेंट शेयरिंग कोन रहइबो मिडिल कर देछि सेंट्रल गवर्नमेंट रे केते रहइबो पाखा पाखी 49,000 कोटी टंका जोटा कि 70% शेयर करछि आउ स्टेट गवर्नमेंट केते रहइबो 21,000 हला 37 करोड़ सो 30% सो एटी कोन हबो सेंटर स्टेट रो केते रहइबो भागा भागी सेंटर स्टेट जॉइंट वेंचर हला सेंटर स्टेट रो जॉइंट वेंचर केते रहइबो 70 + 30 यार 70% रहइबो हला फाइनेंशियल असिस्टेंस यार हला सेंटर 70 आउ स्टेट गवर्नमेंट 30% 60-40 देले भूल हो सो दिस इज आल्सो नोटेड माने गोटे गोटे पारा रे पॉइंट रे 3-4टा क्वेश्चन जस्ट मेक ए नोट ऑफ दिस राइट एडी पिला भूल करन टिके हा पढ दो हां एटा तो आसीबो खाली हां मो नाइ मो कहि कि परीक्षा रे भूल आसबो तापर पुनी गोटे वर्ष सो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट प्लीज बी सिंसियर बी सीरियस तमे निजर कैरियर पे फील करो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन कि गोटे पिला 6-7 वर्ष लागि जाउची पाइया पे 5-6 वर्ष बट केवल हमको सिंसियरिटी हवा दरकार हैला यूनियन अंडर दिस स्कीम्स कोन आसी 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस ऑफ पॉपुलेशन साइज केते पाखा पाखी पॉपुलेशन साइज 500 प्लस हैला इन प्लेन्स एरिया रे देन 250 प्लस इन नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट सुपर एंड यूटीज पाखा पाखी रहउची देन स्पेशल कैटेगरी एरियाज ऑफ ट्राइबल शेड्यूल भी ट्राइबल सेक्टर पई हैला शेड्यूल ट्राइब्स शेड्यूल भी रे आसी देखो गवर्नमेंट रे केते केते को स्कीम रे की आछन पुनी आ तो रिपीट करछि 25 अनकनेक्टेड हैबिटेशन काहा को नउछि 500 प्लस इन प्लेन एरिया रे 250 प्लस इन नॉर्थ ईस्ट सेक्टर एंड हिली स्टेट्स एंड यूटीज रे आसी देन योर स्पेशल कैटेगरी ट्राइबल हैला शेड्यूल ट्राइब्स एसटी आछन शेड्यूल भी रे आछन देन एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स भी आसी also desert areas माने राजस्थान एरियाज भी आसी माने रन ऑफ कच्छ राजस्थान डेजर्ट एरिया माने कोन देखली दिस इज योर थर्ड डेजर्ट एंड आल्सो रन ऑफ कच्छ ठीक है रन ऑफ कच्छ आल्सो एरिया इज कमिंग दिस वन ठीक है एंड आल्सो 100 प्लस एडी न्यूली एडिशन 100 प्लस कोथरे आसी LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नक्सलाइट्स ऊपर आज किछि पॉइंट कहबी बहुत सुंदर पढ़ा एटा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को जगह रे सेटा इंटीरियर दुर्गम अंचल जो इंडिया के हैं नक्सलिज्म माओइस्ट इंसर्जेंसी बेसिकली माओइस्ट इंसर्जेंसी माओइस्ट खास कर जदि मु दांतेवाड़ा इन छत्तीसगढ़ सुकमा विषय त हम समस्त को जण हला ओडिसा रो जदि हम देखिबा नवरंगपुर आ कलाहांडी सेपटे कंधमाल एरिया सेपटे भी रछंती ओके दिस आर बेसिकली सम फंडेड तुम आगु मु कहबी ठीक अछि affected districts as per the census 2011 so this is on basis of the census 2011 LWE left wing extremism will have a red corridor but one कहबी ठीक माने संक्षेप पर मु कहबी शॉर्टली थर्ड की अछि
This under scheme 62,500 kilometer of all weather roads will provide to unconnected habitations, construction required bridges हला कौन कौन आप तो bridges भी दरकार हला bridges the alignment of the all weather road also provided, all weather road also provided. So these are the details of the scheme हमें जान ले 2024-25 रो 28-29 70,000 कोटी टंका जो रही 125 कोटी टंका ता भितर सेंटर 70% आउ स्टेट रो 30% पुनी एपटे की के रहला प्लेन रहले नॉर्थ ईस्ट पर रहले डेजर्ट एरिया रहला डिफरेंट ब्लॉक्स रहला डेजर्ट एरिया संगरे हला पुनी तमर रहला किए आउ तापरे एलडब्ल्यू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ता माने कोन गवर्नमेंट हैज टू मेक द पोलराइजेशन मेक टू बैलेंस those areas those pockets hela those who feel those population feel that we are neglected and we are just getting away from the government schemes fruits of the government scheme se jo lwe addition hela left wing extremism please make a note of this kitte बढ़िया जिनसे government इतरे जो तमर जदी देखिबा जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 हला माने पार्ट 4 रे गवर्नमेंट एटा करले हला ई स्कीम्स रे ओके योजना 4 नंबर 4 पार्ट रे एटा बहुत बढ़िया एडिशन से गवर्नमेंट रा आगु वर्तमान देखिबा लेफ्ट विंग LW affected ऊपर टिके मु कहबी LW affected districts refers to regions in को region रे LW affected basically designated by the union ministry तो की करछि it is basically designated by the union ministry government union ministry of किए एटी गोटे क्वेश्चन हला union ministry of home affairs MH हला MHA ministry of home affairs experiencing presence and influence of Naxalites and Maoist हला Naxalites और Maoist मान को जोना concept हमें जानि छिते Marxism ऊपर हला basically to suppress the influence of capitalism ठीक अछि Naxalites और Maoist insurgency Ministry of Home देखिबा Ministry of Home Affairs fund these are areas जोटा कि हमरा led by your Amit Shah ji जो करचोंदी हला security operation target infrastructure development and address to socio economic inequalities जो हम सोसाइटी रे होची socio economic inequalities ताको एड्रेस करिया पई जिनसटा है socio economic inequalities को नेकी बर्तन आगु देखिबा द रेड कॉरिडोर्स हला बेसिकली द रेड कॉरिडोर्स जदि हम देखिबा एक कांसेप्ट आछि जस्ट एटी देखो जस्ट लुक एट दिस डायग्राम दिस इज द रेड कॉरिडोर तमे कोन देखु छ रेड कॉरिडोर रे these are the states Chhattisgarh Jharkhand Odisha रे किछि पार्ट अछि साउदर्न ओडिशा then Andhra Pradesh Telangana भी किछि पार्ट अछि हला इतरे कोन देछि हला सब न्यू एरियाज ऑफ माइस्ट्री एक्सपेंशन जेमति देखिबो नॉर्थ ईस्ट रे वर्तमान एक्सपेंशन ऑफ एटी वर्तमान कोन होछि एक्सपेंशन ऑफ नाक्सलिज्म आगुरु जति थिला वर्तमान बड़ी आगुरु जो उल्फा थिला आसाम रे तमे जानिथिबो वर्तमान एटा एक्सटेंशन होछि मन रखो एटा हला जीएस क्वेश्चन रे हाईली अफेक्टेड एरियाज रे हमर आछन जोडा कि हमर ई खास करके ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया रे हला हाईली अफेक्टेड एरियाज की आछे एटा ई पार्ट रे ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया ठीक अछि ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया हला रेड कॉरिडोर रे के आछन देन आउ जोडा आछन से हमने लेस अफेक्टेड आगु को देखिया पुनी कोन देखले रेड कॉरिडोर रे हिस्टोरिकली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जोडा कहउछन हिस्टोरिकली अंकर कोन अंक भीतर दुख कोन लेफ्ट अंकर जदि हम कोनो जिंस एनालिसिस करि परिबो we should get it know what was the history what was the background what leads why it is continuous for the more than a century काहे कि समानकर एगोनी काहे कि समान डिससैटिस्फैक्शंस अछि जानिबा LW affected districts were spread across जदि देखिबा the belt of remote tribal and underdeveloped हला belt of your remote tribal and underdeveloped regions unknown as the red corridor concept हला एटा बेसिकली को जगह रे remote location हेतिबो tribal and underdeveloped regions एटी मु बोल्ड प्ले देउछि the definition remote tribal and underdeveloped remote area हेतिबो that is far away from the mainstream locations of the urban centers and the city centers or the towns से माने इतवे रिमोट ट्राइबल अंडरडेवलप्ड तो सेमान को फील कोन हमें जानछोंदी कि गवर्नमेंट रो जो भी स्कीम्स रो हला तार जो फ्रूट्स गुडा सेमान पक्को इंप्लीमेंट ही पारुनी पहुंची पारुनी दैट इज व्हाट they feel that they have been consistently neglected from the decades or centuries that is what it is named as red corridor please make a note of this ताकि सबु बडो जिंस को हला दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जोडा को जे एपी सेंटर ऑफ द नक्सलिज्म इंडिया नाउ हला The government is implementing security related expenditure SRE schemes as special central assistance in these districts to boost infrastructure कौन करिया पे to boost infrastructure build roads install communications वर्तमान जेमति install communication networks and improve local livelihoods
जेमती फॉर एग्जांपल से मैं टेकिंग अबाउट हला आकुने की मिडिनली दिस इज बस्तर एरिया इटमिनली ठीक अछि बस्तर और दांतेवाड़ा मैं लिखली दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट दांतेवाड़ा दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोठी छत्तीसगढ़ रे माने छत्तीसगढ़ दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट रे एठी गोटे ब्लॉक अछि सुकमा मन रखो सुकमा हला सुकमा सुकमा रे तुम जानिथो हाई वेरी माने बहुत ज्यादा एटी नक्सलिज्म अछि पीपल्स आर अफेक्टेड सेठी कोन होबो तांकर भी पिला पिली अछन तांको से माने सोलार तमे आई वाज जस्ट वेंट थ्रू एन आर्टिकल इन हिंदू कि पढ़ी के एते दुख लागला सेठी तांकर माने केरोसिन भी नाही ठीक किना सरी गले दे हैव टू गो फॉर माइल्स अवे टू कलेक्ट फ्रॉम द सेंटर तो से गवर्नमेंट जाइए भितर से सोलार लाइट दिया सोलार लैंप दिया पिला माने पाठ पढ़ुचन बेसिक्स एमिनिटीज में हेल्थ खोला से फील कले यस इक्वली वी आर आल्सो इंपोर्टेंट एज एन पार्ट ऑफ सिटीजन्स ऑफ द कंट्री राइट सो वर्तमान ये जो एरिया मुझे एग्जांपल देली वर्तमान धीरे धीरे कौन होची इम्बैलेंस को गैप करा होची इनइक्वालिटीज जो प्रिवेल हेची रीजनलाइजेशन ऑफ इम्बैलेंस जोटा रही रीजनलाइजेशन रे से फैक्टर गवर्नमेंट वर्तमान कौन धीरे धीरे ब्रिज गैप करछ ऑफ कोर्स मेनी लाइव्स हैव गॉन आउट इफ यू शो द थैंक्स टू द your central command armed forces that giving their life challenge वर्तमान भी देखो छत्तीसगढ़ एथरे भी डायनामाइट ब्लास्ट होची मरुचन सो दैट इज वन धीरे धीरे जदि हमें कंपेयर करिबा 100 इयर्स बैक 50 इयर्स बैक जदि हमें देखिबा वर्तमान से बहुत डेवलप हेलानी से भी धीरे धीरे सरेंडर करचंती से भी कहउछन नहीं हमें भी काम करी हमें भी हम लोग भी जिएंगे इज्जत के साथ एक डिग्निफाइड लाइफ with work so that is what government is trying to neutralize this factor is basically left wing extremism factor ta and basically it मन रखो इगोड these are the all questions पुनी next पुनी मो आसीबी पुनी हमें आसीबा ओडिसा स्कीम्स नै कि होप इट इज यूजफुल ठीक है अनाउंस कर देबा वर्तमान जो रिजल्ट बाहर छी बहुत खुशी बहुत पुराना स्टूडेंट सौरभ महापात्र जो इज हैविंग सिक्योर्ड 30 रैंक्स ओके वन ऑफ माय ओल्ड स्टूडेंट and Ramo is my classroom student there 50 rank scores and also Srikant is also last time bitra new improvement करके 129 and also the Himalaya is 195 so basically जदि हमें देखिबा कि चार जन करो जहां भी आसी माने हले एमान करो जहां भी डेवलपमेंट इज ऑल बिकॉज़ ऑफ देयर एफर्ट्स राइट ऑल बिकॉज़ ऑफ देयर एफर्ट्स सब माने भी करो डेफिनेटली एटा आबो ठीक है डेफिनेटली जदि तापर मु कहबी जीएस बैच ऑलरेडी इट इज अबाउट टू स्टार्ट दिस ईयर डेफिनेटली ऑफलाइन ओके ऑनलाइन रे हमरो अछि योर जेंते एज यूजुअल दैट योर ऑप्शनल बैचेस ऑफलाइन यूपीएससी रे चलছে ऑनलाइन इज आल्सो देयर ओके फ्रॉम लास्ट 7-8 मंथ्स ऑनलाइन बैच आल्सो स्टार्टेड ठीक अछि सो पुनी देखा हबो आज पे इतिकी थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस विल अगेन मीट with another new topic schemes जहाँ भी किसी any doubt you can access to me है मते text करी परिबो जहाँ भी किसी requirement है access to me with by texting 7978090972 these are my you can go find a WhatsApp number ठीक है WhatsApp or whatever number you can go for that one right admission is open you can come and contact thank you so much good morning thank you so much thank you everyone have a good day thank you so much okay jai Jagannath thank you so much